Hello. So today we have been celebrating the Engineers Day. So all are welcome. So with the approval of the Center Director, I am commencing the today's program. A day dedicated to acknowledge the inventive spirit of the engineers across the country and in commemoration of one of India's greatest engineers, Bharat Ratna Sir Mokshagundam Vishwesaraya. We celebrate Engineers Day every year. On this special day, we remember the hard work and determination of countless engineers across the world and across the ages. We pay our respect to them for their immense contributions and for making the unimaginable a reality. This isn't limited to just physical structures or devices. Engineers also shape ideas, create systems, and build innovative solutions to some of our society's most complex problems. Here at GMRT, all our engineers are continuously striving for innovations and breakthroughs. Celebrating Engineers Day at GMRT is an opportunity to acknowledge the profession and the vital role of our engineers play every day. So now I would request and invite today's guest speakers, Shri Mukul Vasne, Director John Deere, Professor Rajamani Vijay Raghavan from TIFR, our Center Director Professor Yashwant Gupta, Dean GMRT Observatory Professor Ishwar Chandra. I would request Sri Suresh Kumar and Sri Dr. Suresh Kumar, and Sri Shailendra Bagde, please take them to the dais. So with claps, we all welcome them. So we start with the inauguration of today's program with lamp lighting. Yeah, please, please.
Thank you all. Please be seated. Now I request Professor Yashwant Gupta to welcome and felicitate Sri Mukul Varshney. The memento for the remembrance, and सभी को मेरा नमस्कार और आज अभियंता दिवस पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मनीषा जी, आपका भी स्वागत है। आप इस गांव की प्रधान हैं और मैं पहली बार इस गांव में आया हूं। हालांकि मेरा काम गांव में ही है क्योंकि मैं किसानों के साथ काम करता हूं, नई टेक्नोलॉजी पे काम करता हूं और किसानों को कैसे समृद्ध और कैसे उनकी पैदावार को बढ़ाया जाए, लगातार इसी पे काम करता रहा हूँ। तो आप सबका, इस गांव के सभी निवासियों का, प्रोफेसर्स का और सारे यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स बैठे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। जस्ट ए ब्रीफ, मैं हिंदी में बात करूँ या अंग्रेज़ी में, आपको जो भाषा पसंद है। मैं सौभाग्य से दोनों भाषा बोल सकता हूँ। ओके, तो मैं हिंदी अंग्रेज़ी दोनों का इस्तेमाल करूँगा। हेलो हेलो हेलो। और बीच बीच में अगर किसी भी चीज़ पे कोई संदेह हो या कुछ पूछना हो तो जस्ट रेज योर हैंड्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। बहुत संक्षिप्त में, जॉन डियर एक बड़ी कंपनी है जो अमेरिका में है और अभी जॉन डियर को तकरीबन आप देख सकते हैं 190 वर्ष होने वाले हैं। शायद ये एक ऐसी एग्रीकल्चर की कंपनी है जो लगातार प्रगति करती आई है और किसी को टेक ओवर का अभी तक किसी ने बिड नहीं किया है। तो जॉन डियर फाइनेंशियली बहुत डिसिप्लिन्ड है, इथिकली बहुत कंट्रोल्ड है और बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है, चाहे वो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हो, कृषि हो, लॉन मूवर्स हो और साथ साथ हम थोड़ा स्पोर्ट्स और इस पर भी ध्यान देते रहते हैं। इंजीनियर्स की दो खास बात होती हैं, और आप सब इंजीनियर्स हैं या ज़्यादातर यहाँ पे लोग इंजीनियर्स हैं। एक तो उनका दृष्टिकोण बहुत मजबूत होता है, दे नो वेयर दे हैव टू गो और क्या करना है जीवन में। जैसा कि आपने इनॉग्रल स्पीच में बताया कि मेडिकल में भी जो डिवाइस बनते हैं डॉक्टर्स इंजीनियर्स पे निर्भर करते हैं ताकि हम सही मशीन कर सकें, डायग्नोसिस अच्छी हो सके और इंसान को उसका समाधान मिल सके। दूसरी, इंजीनियर्स हमेशा लॉजिकल होते हैं। आई एम श्योर यू एग्री that nobody is more logical than engineers. You know, everybody has whims and fancies, but engineers actually go by logic, and I'm so very proud to do that. मेरे इंट्रोडक्शन में थोड़ा मेरे बारे में बताया गया कि मैं खाना वाना में बहुत रुचि रखता हूँ। इनफैक्ट मैं जब छोटा था तो मैं शेफ़ बनना चाहता था, मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता था, मैं म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, एक रॉक ग्रुप में मैं ड्रमर था। लेकिन मेरे पिताजी जो कि डीन थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, एक दिन जब मैं 10वीं में था तो एक दिन मेरे को बड़े प्यार से बुलाया, बोले बेटा जो तुम करना चाहते हो उससे ज़िंदगी बिता पाओगे लेकिन सम्मान शायद नहीं मिलेगा, सम्मान केवल डॉक्टर और इंजीनियर बनने से होता है। और ये 1981 की बात है। तो और दूसरी बात उन्होंने जो बोली, जो जिसने मेरे को डरा दिया कि अगर तुम इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनोगे तो कोई अच्छी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। तो मैं बहुत डर गया और मैंने अपना जो सपना था शेफ़ बनने का या होटल इंडस्ट्री में जाने का, उसका मार्ग परवरित किया और मैं इंजीनियर बन गया। एंड आई एम हैप्पी टू बी एन इंजीनियर। लेकिन यहाँ पे एक फ़ोटो मैं दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे आप इंजीनियर्स और सब लॉजिक और विजन की बात करते हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख
इन साहब से मिली जो मेरे फ़ोन से मेरी माँ से बात कर रहे हैं। मेरी माँ सिंगापुर में रहती है और ये जो शख्स है इनका नाम है हसन अली और ये हमारे घर में केयर टेकर थे, क्योंकि मेरे पिताजी डीन थे तो घर था, किचन गार्डन था, तो केयर टेकर थे। ईमानदारी, एथिक्स, वैल्यूज़ क्या होते हैं ये मैंने हसन अली दादाजी से सीखा। मैं बहुत छोटा था और उस समय घर में कॉल बेल्स नहीं होती थी। आज तो बहुत सुंदर सुंदर आप बटन दबाएं तो अच्छी अच्छी आवाज़, म्यूज़िक सुनाई देता है। उस समय डोर को नॉक किया जाता था, टक टक ऐसे। तो जब किसी ने नॉक किया तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तेरा दरवाज़ा खोलो, कौन आया है? तो मैं दौड़ के उत्साहित होकर गया और मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे हसन अली थे और मेरी माँ ने अंदर से पूछा, बेटा कौन आया? मैंने कहा हसन अली। मेरी माँ तेज़ी से बाहर आई और इससे पहले वो कुछ कहती उन्होंने बहुत कस के एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा मेरे को। और मैं समझ नहीं पाया कि जब मैंने बताया कि हसन अली आए, हसन अली आए हैं, तो बोली, बेटा आपको उम्र का लिहाज होना चाहिए, सम्मान क्या कहते हैं सीखना चाहिए। इंसान अपने काम से बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन इंसान इंसानियत से बड़ा छोटा होता है। चूंकि इन्होंने तुमको बहुत कुछ सिखाया और तुम उनका नाम ले रहे हो, उनसे क्षमा मांगो। और वो दिन है, आज का दिन है। मेरी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट क्या होता है वो एक तरीके से मेरी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स बन चुकी है। सो गोइंग फॉरवर्ड, you can see my daughters and I'm rowing a boat and the food that I cook। तो ये मैं आमंत्रित भी करता हूँ आप में से जो भी अच्छा खाना, स्पेशल खाना खाना चाहें, you are more than welcome to visit us and I'll be more than happy to cook it and celebrate with all of you। ये जॉन डियर की छोटी सी जर्नी है। हम जब भारत में आए थे तो टेक्नोलॉजी नाम की ट्रैक्टर में कोई चीज़ नहीं होती थी और अक्सर ये कहा जाता था कि वेल, ट्रैक्टर इज अ रोबस्ट मशीन, इट हैज़ टू बी रोबस्ट, नहीं तो खेत में ठीक से चल नहीं पाएगी। आप में से कई लोग किसान हैं, गांव में रहते हैं, और उस समय जॉन डियर हैड अ विजन कि नो, वी हैव टू बी टेक्नोलॉजी लीडर्स, क्योंकि जॉन डियर में सब इंजीनियर्स काम करते हैं, अलग अलग जगह वो काम कर चुके हैं। एंड देयरफॉर वी थॉट एज वी कम विल ब्रिंग सम बेसिक टेक्नोलॉजी। उस समय मारुति कार में पावर स्टीयरिंग नहीं होता था और हम जॉन डियर में पावर स्टीयरिंग लेके आए थे। कंपटीशन ने बहुत र्यूमर उड़ाया कि खेत में, उबड़ खाबड़ खेत में पावर स्टीयरिंग इतना सॉफ्ट होता है कि चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा। हम ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक लाए थे क्योंकि हमने किसानों को देखा था 2-2 ट्रॉली गन्ने की 26 टन, 22 टन, 18 टन पहाड़ों पे और उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाते हैं। अभी तो रोड बहुत अच्छी हो गई। सो ये चैलेंज हमारे सामने था एंड वी डिसाइडेड कि विल गिव पावर स्टीयरिंग एंड विल गिव ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक्स। द कंपटीशन क्रिटिसाइज्ड, लेकिन आज ये बेसिक हो गया है। कृषि ट्रैक्टर्स में ये 2 फाउंडेशनल हैं। मैं और भी टेक्नोलॉजीज की बात करूंगा एज आई मूव फॉरवर्ड, बट दैट्स बीन अ जर्नी। 1997 में हमने लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ शुरुआत की और 2025 में हम पूरे देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर, ग्लोबल आईटी सेंटर और ट्रैक्टर में बहुत सारा विकास करके हम किसानों के सामने लाए। अब मैं आपको एक 4 लोगों का फोटो दिखाता हूं। इसमें कुछ पॉलिटिशियन हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं और एक शख्स इंजीनियर भी है। पहचान रहे हैं आप तस्वीर? बहुत आसान है। आप लोग बताएं और मेरे साथ थोड़ा पार्टिसिपेट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। कैन यू गेस हु आर दिस पीपल? लाल बहादुर शास्त्री साहब हैं आखिरी में। हाँ प्रोफेसर, आप okay, yes, so we have लाल बहादुर शास्त्री साहब, डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब, लेकिन बीच में जो 2 लोग हैं, देखिए क्या होता है कि जिंदगी में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर पर्पस नहीं है तो शायद जिंदगी में हम ट्रांसफॉर्मेशनल डिसीजंस या ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव नहीं ला पाते हैं। बीच में सी सुब्रमण्यम साहब हैं जो कृषि मंत्री थे, उसके बगल में शिवरमन साहब हैं जो कृषि सेक्रेटरी थे, और भारत का पहला ग्रीन रेवोल्यूशन इनके कार्यकाल में हुआ था।
अगर वो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता तो शायद आज हम भुखमरी का शिकार होते या कोई और टेक्नोलॉजी आई होती, क्योंकि समय काफी बीत चुका है। लेकिन इनका विजन था कि भारत को वीट और राइस प्रोडक्टिव नेशन कैसे बनाया जाए, और उस विजन को इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का शेप दिया। और आज अगर हम ये दो ग्रेन्स में कनक और धान, जिसको मराठी में बोलते हैं, या गेहूं और चावल पूरे देश में बोलते हैं, सरप्लस इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि इनका विजन रहा है, और इसीलिए उनको S⁴ बोला जाता था। लेकिन इस स्लाइड के जरिए मैं ये बताना चाहता हूं, चाहे हमारा जिंदगी हो, हमारी संस्था हो, चाहे GMRT की बात हो, GMRT also has a purpose, GMRT also has a vision, and that's why so many engineers are engaged and they are working। और डॉक्टर साहब ने बताया कि लगातार हम कोशिश करते आते हैं कि कल और बेहतर क्या करें। दो ही शख्स हैं जो स्वयं को बेंचमार्क करते हैं। एक स्पोर्ट्समैन होता है जो कहता है कि मैं अपने आप से बेहतर कैसे कर सकता हूं, दूसरा इंजीनियर होता है कि कल मैंने ये किया, आज मैं उससे बेहतर क्या कर सकता हूं। बाकी डॉक्टर और साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस, विद रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट्स, ये लोग दूसरों को भी कई बार बेंचमार्क करते हैं, लेकिन इंजीनियर, अभियंता और स्पोर्ट्समैन हमेशा स्वयं को बेंचमार्क करता है और इसीलिए आगे बढ़ता रहता है। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट विद ए पर्पस, वहां पे हमने बताया अ मिशन विद ए पर्पस, यहां प्रोडक्ट। ताजमहल किसने बनाया था? नहीं, उन्होंने बनवाया था, लेकिन उन्होंने अपना पर्पस स्टेटमेंट एक शख्स के सामने रखा था। वो पर्शियन थे, मोहम्मद ईसा करके। उनके सामने पर्पस रखा था कि एक ऐसी मोहब्बत की मिसाल बनाई जाए जिसे कई सालों तक लोग याद रखें, और इसका विजन और आर्किटेक्चर मोहम्मद ईसा साहब ने किया था। और इसीलिए अगर इस पर्पस और विजन से कोई भी चीज़ बनाई जाए, वो सालों साल सस्टेन्ड रहती है। ठीक इसी तरह से 1837 में जॉन डियर ने वर्ल्ड का सबसे पहला मोल्ड बोल्ड प्लाव बनाया था। आज भी वो डिजाइन बरकरार है, खेत में मोल्ड बोल्ड प्लाव चलता है, क्योंकि ये पहला प्लाव था जो स्टील बॉटम था, जिसपे मट्टी चिपकती नहीं थी। ब्लैक कॉटन सॉइल जो महाराष्ट्र और साउथ में बहुत ज्यादा प्रचलित है, अगर थोड़ा सा भी पानी ज्यादा हो तो इंप्लीमेंट पे चिपक जाती है। उस समय घोड़ों से खेती होती थी, लगातार चिपकते थे, तो लोग उसको स्क्रैप करते थे, समय ज्यादा लगता था, स्पीड कम थी। और फर्स्ट रेवोल्यूशनरी with that vision कि how I can ease agriculture was developed, and that's where John Deere took a lead in that. John Deere अब प्रोडक्शन सिस्टम अप्रोच पे काम कर रहा है। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? बड़ी सिंपल सी भाषा में, जब हम अपने बच्चे को नर्सरी में भेजते हैं तो हम ये तय कर लेते हैं नर्सरी के बाद फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट के बाद फिर 7th में जाएगा, जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल, फिर उसके बाद वो, तो पूरा उसका एक प्लान बनाते हैं। कृषि भी उसी तरह से एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में कोई फर्क नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन होती है, रॉ मटेरियल होता है, उसको प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। ठीक इसी तरह से कृषि में भी एक सप्लाई चेन है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे हमारी मिट्टी प्रोसेसिंग के लिए काम आती है, हमारी बीज, हमारी फर्टिलाइजर्स। लेकिन इन सब के बीच में, इस वैल्यू चेन के बीच में एक चीज जो हम सब भूल गए थे और दुनिया में भूल गए थे, वो था एनवायरमेंट, वाटर एंड सॉइल सस्टेनेबिलिटी पे काम। प्रोडक्शन सिस्टम के जरिए हम ना ही केवल इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, लेकिन हर वो पद्धति में हाउ वी कैन मेक इट सस्टेनेबल, सॉइल डिटोरिएट ना हो, पानी कम से कम लगे और पर्यावरण को नुकसान ना हो। मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा। इस पे हमारे इंजीनियर्स लगातार काम करते रहते हैं और इसी को हम प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। टेक स्टैक, हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से ऑटोनॉमी की तरफ की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि पहले इट वाज एम्बेडेड ऑन द मशीन, नाउ विद द डिजिटल अपॉर्चुनिटी, और मैं डिजिटल के बारे में अभी बात करूंगा आपसे, जो कि भारत में सबसे ज्यादा सक्षम डिजिटल अपॉर्चुनिटी है दुनिया भर की। हम 5G पे आ गए हैं,
शायद अमेरिका, यूरोप उस पे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स चाइना इज टॉकिंग अबाउट 10G एज ऑफ दिस मोमेंट, लेकिन 5G इटसेल्फ एंड जिस हिसाब से हम उस पर विस्तार कर रहे हैं विल एनेबल अ लॉट ऑफ ऑटोनोमी। आप देख सकते हैं ई कॉमर्स बहुत आसान हो गई है। गांव में बैठ के आप अमेज़ॉन और इस सब से CSC आप अपने मोबाइल से आप अपने आधार कार्ड को बनवा सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ट्रैक ट्रेस कर सकते हैं। पहले जो अपने दूर के रिश्तेदारों से खत में लिख के हम संपर्क करते थे, आज वीडियो कॉल से कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जॉन डियर भी AI, रिमोट सेंसिंग और मशीन लर्निंग का बहुत इस्तेमाल कर रही है, और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारे मशीन में ऑलरेडी एम्बेड हो गई हैं और हम उसको किसान तक लेके जा रहे हैं। उसकी कुछ झलक मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताने वाला हूं। ऐसा हम कैसे कर पाते हैं? इसके लिए जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन में सर ने बताया कि मेरा काम है बिजनेस एडवोकेसी, मेरा काम है पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो मैं सरकार के तमाम लोगों से मिलता रहता हूं, चाहे वो चाइना में हो, चाहे भारत में हो, चाहे अफ्रीका में हो, और उनको बताते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, उससे उनके देश का क्या फ़ायदा है, उनसे उनके किसानों का क्या फ़ायदा है। और उसकी कुछ मैंने आपको तस्वीर बताई। डॉक्टर कलाम के साथ मेरी सबसे ज़्यादा यादगार लम्हे रहे। मैं समय पे कैसा कर रहा हूँ, कोई बताएगा कितना मिनट हुआ मुझे? क्योंकि 1 घंटा दिया है, मैं उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहता। 15 मिनट हुआ है अभी। Have I finished 45 minutes? I'm supposed to finish at 11:30, right? Yes, sir. 10:30 to 11:30. So I'm okay. I'll keep a watch. तो मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूं कि आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो जाइए, कितने बड़े डॉक्टर हो जाइए, लेकिन अगर ह्यूमिलिटी अंदर नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं अभी 23 दिसंबर 2023 को दिल्ली में था छुट्टी पे। तो मेरी श्रीमती जी, जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में अध्यापिका हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि सिंस वी आर हियर कैन वी सी अक्षरधाम। आप सब जानते हैं अक्षरधाम इस समय अबू धाबी में है, इस समय न्यूयॉर्क में है, और भारत में तो खैर अक्षरधाम एक कल्चर को प्रमोट करता है, भारतीय कल्चर को प्रमोट करता है, वो रिलीजन प्रमोट नहीं करता है। मैं आपसे उस पे विभाजित करना चाहता हूं कि कई लोग सोचेंगे कि शायद मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं कल्चर की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो डॉक्टर कलाम ने एक चिट्ठी लिखी प्रमुख स्वामी जी को, जिन्होंने अबू धाबी के अक्षरधाम की सपना देखा था, विजन था, और किस पर्पज से वो वहाँ करना चाहते थे कि आई वॉन्ट टू मीट यू। उस समय डॉक्टर कलाम वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। तो चूंकि वो प्रेसिडेंट्स ऑफिस से गया था, इमीडिएटली उनको अपॉइंटमेंट मिला। और मैं जब स्वामी दिव्य मूर्ति को मिला था अभी रिसेंटली 2023 में, तो ये किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया और मुझे इतना प्रभावित किया उस किस्से ने, तो मैं आपके सामने उसको शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। तो जब आप स्वामी दिव्य मूर्ति के चेंबर में जाएंगे तो एल शेप्ड रहता है, बीच में स्वामी जी बैठते हैं और राइट हैंड साइड में जो सबसे सीनियर पर्सन होता है उनको बैठाया जाता है। तो जब मैं स्वामी जी से मिला तो उन्होंने मुझे वहाँ बैठाया, और बड़ी मुश्किल से तो एक अपॉइंटमेंट मिला था, लेकिन ही वॉज वेरी काइंड कि वो मेरे साथ अब कुछ समय बिताएं। तो उन्होंने जो किस्सा बताया कि जब स्वामी परम के जब उन्होंने आमंत्रण दिया उनको कि आने का, तो ये अपने पूरे आर्मी सिक्योरिटी और पुलिस सिक्योरिटी के साथ पहुंचे थे। कलाम साहब ने सबको कहा कि आप लोग बाहर रहेंगे, अंदर कोई नहीं आएगा। प्रोटोकॉल ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है और हम इस प्रोटोकॉल को तोड़ नहीं सकते। काफी कहा सुनी के बाद उन्होंने कहा कि जो आपका ऑर्डरली है, जो आर्मी का ऑफिसर है, वो आपके साथ जाएगा। तो वो उनके केबिन तक, उनके कक्ष तक, स्वामी जी के कक्ष तक पहुंचे। कलाम साहब ने अपने जूते उतारे। अब आप देखिए, ह्यूमिलिटी की हम बात कर रहे हैं। जूते उतार के वो अंदर गए, उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी बैठे थे और यहाँ पे सोफे खाली थे, क्योंकि अब्दुल कलाम साहब को राइट हैंड साइड पे बैठना था। स्वामी जी खड़े हुए, उन्होंने प्रणाम किया, स्वागत किया,
और उन्होंने देखा कि वो जूता बाहर उतार के आए हैं तो समझ गए वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर उन लोगों के लिए है जो अपने ड्राइवरों से ट्रैक्टर चलवाते हैं। अक्सर कंप्लेन ये रहती है कि सुबह वो निकला, पेड़ के नीचे सो गया, या सुबह टंकी फुल करके गया, थोड़ा सा डीजल चुरा लिया। ऐसे जो ड्राइवर्स होते हैं, इसमें एक ऐसा अलर्ट है कि मालिक के पास तुरंत आपका संदेश आएगा कि आपका ड्राइवर फलां पेड़ के नीचे सो रहा है। दूसरा कि आपका ड्राइवर ने फ्यूल टैंक से डीजल निकालने की प्रयास कर रहा है और चोरी हो सकती है, तो मालिक जो है लगातार उसको करता है। फ्रंट पीटीओ, अब अक्सर खेती में ये केवल भारत में जॉन डियर लेके आई, हमारे इंजीनियर्स ने इस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। फ्रंट पीटीओ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तस्वीर। अक्सर क्या होता है, जो किसान से संबंधित रखते हैं, आप पीछे एक इंप्लीमेंट लगाते हैं, पहले लैंड को टर्न करते हैं, फिर पल्वराइज करते हैं, फिर मेड़ बनाते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर आप उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर उसके बाद आप पद्धति को तो 5 से 7 बार ट्रैक्टर को, अगर अच्छी खेती कर रही है तो 5 से 7 बार ट्रैक्टर को चलाना पड़ता है। तो यानी कि 5 से 7 बार का टाइम, 5 से 7 बार का ईंधन, 5 से 7 बार का धुआं एनवायरनमेंट में उतना। हालांकि अब तो ट्रेम की बात हो रही है, एमिशंस की बात हो रही है, तो धुएं वाली समस्या नहीं है, लेकिन ज़मीन को लगातार 5-6 बार डीजल टाइम की जो खपत है, तो हमने फ्रंट पीटीओ निकाला। इससे आप 2 से 3 बार में वो काम कर सकते हैं जो अमूमन किसान 5 से 7 बार में करता है। सामने पल्वराइज हुई, पीछे मेड़ बनी, उसके पीछे आपने सोइंग की, तो यू सेव टाइम एंड यू सेव फ्यूल बोथ। सो दैट्स द न्यू टेक्नोलॉजी वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। पावर रिवर्सर, अक्सर गेयर बदल के सामने पीछे करना होता है। वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, आपने बटन दबाया, so you can do that both the times without losing any fraction of a minute, faster, speedier. ऑटो ट्रैक, इसकी वीडियो दिखाऊंगा कि कई बार हम अपने अंदाज से जब ट्रैक्टर चलाते हैं तो शुरू तो यहाँ कर रहे हैं, पता चला हम दूसरी तरफ चले गए, सीधी लाइन में जाने की जगह। ये जीपीएस कंट्रोल्ड है और 1 इंच की एक्यूरेसी पे प्लांट टू प्लांट, सीड टू सीड का डिस्टेंस आपको लगातार आपके पैनल पे बताती रहती है। ये ऑटो ट्रैक है और फुल स्टैक कैपेबिलिटी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है ये वाली तस्वीर दिखाने में। ये प्रोडक्ट हमारे भारत के लिए नहीं बना है, लेकिन ये भारत के इंजीनियर्स ने बनाया है और ये ब्राज़ील के लिए बना है। सालों दर साल ब्राज़ील के इंजीनियर्स कोशिश करते रहे और कुछ ही महीनों में, कुछ ही साल में भारत के इंजीनियर्स ने फुल स्टैक प्रोडक्ट बनाया। ये इक्विलिप्टस प्लांटर है, ये गड्ढा भी खोदता है, प्लांट भी लगाता है और साथ में उसमें पानी भी देता है। तो मेरे ख्याल से भारत के इंजीनियर्स की कार्य क्षमता किसी भी देश के इंजीनियर्स से कहीं ज़्यादा बेहतर है और कई गुनी है, और उस सब के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ऑफ कोर्स हम फाइनेंस कंपनी भी हैं और हम डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप को आपकी भाषा में एग्रीमेंट भी आता है। ये यूनिक है, कोई भी एनबीएफसी अनेक भाषा में एग्रीमेंट नहीं करती है। जॉन डियर 18 भाषा में एग्रीमेंट करता है और आपको आपके फ़ोन पे लगातार आपकी ईएमआई, आपका लोन हुआ कि नहीं, और शायद एनबीएफसीज में सबसे तेज लोन वितरण की प्रक्रिया, क्योंकि कई लोन्स हमने 2-2 घंटे में भी दिए हैं। अमूमन हम 7 घंटे से 8 घंटे लेते हैं, लेकिन कुछ क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स के 2-2 घंटे में क्या है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी। अब हम लोग किसान हैं, कई बार हम लोग, और ये जब छोटे थे, आप लोग भी सर जब छोटे रहे होंगे, कि बुआई की कुछ बीज पंछी ले जाते थे। उससे किसका नुकसान है? हम लोग सोचते हैं परोपकार का काम है, लेकिन इससे किसान का नुकसान है, क्योंकि अगर उसने 1 किलो बीज बोया और उसमें से 200 ग्राम पंछी ले गए, तो 200 ग्राम की बुवाई का स्ट्रेट अवे नुकसान है। पंछी तो पंछी हैं, वो तो जहाँ चाहें वहाँ जाएंगे, कीड़े भी खाएंगे, बीज भी उठाएंगे, लेकिन हम इस पे बहुत सेंसिटिव हैं और हम
एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, लेके आए हैं, जो कि हर सीड गारंटी से जर्मिनेट होगा, हर स्पीड एक ही डेप्थ पे गिरेगा, एक ही प्रेशर में दबेगा, ताकि जर्मिनेशन के चांसेस उसके बढ़ जाएं। और इस टेक्नोलॉजी से 95% जर्मिनेशन हमने अचीव किया है, एज अगेंस्ट कन्वेंशनल ऑफ 65%. So you can see a 30% increase, and that's to say we have to be accountable to make every seed count. Make every water drop count. अक्सर फ्लड इरिगेशन में या स्प्रिंकलर में हम बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं, उससे ज़मीन में रन ऑफ होता है, और पानी एक ऐसी कमोडिटी है जो धीरे धीरे एक किल्लत बनती जा रही है, एक रेयर रिसोर्स होता जा रहा है। तो हाउ डू वी इफेक्टिवली यूज? वी यूज टेक्नोलॉजीज कि प्लांट हमको सिम्टोमैटिक सिग्नल देता है कि उसको प्यास लग रही है, और उस समय जितनी प्यास है उतना ही पानी उसको दिया जाता है। मेक एवरी ग्रेन काउंट, कि हम हार्वेस्टिंग ऐसे करें कि लॉसेस मिनिमम हो। सो दैट टेक्नोलॉजी ऑल्सो जॉन डियर हैज बीन spearheading and has introduced. So with this I will show you a couple of videos on what does this technology means. So far so good. Any questions? Okay, we'll leave the questions to the end. We are back to that. Spool nahi ho raha hai. So give me a minute. तो मैंने अभी आपसे ऑटो ट्रैक की बात की कि ये टेक्नोलॉजी भारत में हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, कि 1 इंच एक्यूरेसी, जहां प्लांट टू प्लांट, रो टू रो उसका वो किया जाता है। अपनी सोच पर लगी सीमाओं को पार करने का, अपनी क्षमताओं का निरंतर विस्तार करने का, आने वाले भविष्य को आज ही देखने का, क्योंकि ये जमाना है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी जो आपके काम को सरल और आपकी जिंदगी को समृद्ध बनाती है। जॉन डियर किसान भाइयों के लिए ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी हमेशा पेश करते आए हैं। तभी तो हमने पावर स्टीयरिंग, पावर रिवर्सर, 4 व्हील ड्राइव, ऑयल में डूबे डिस्क ब्रेक्स जैसी नई तकनीकों को लाकर आपके जीवन को सरल बनाया। अब पेश है एक आधुनिक और दमदार टेक्नोलॉजी, जॉन डियर ऑटो ट्रैक। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शुरू करेगी खेती का नया युग। ऑटो ट्रैक एक प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी है। इसका हाई एक्यूरेसी रिसीवर सैटेलाइट द्वारा सुधारित सिग्नल की मदद से आपको 2 कतारों के बीच समान अंतर रखने में सहायता करता है, वो भी 2 इंच के भीतर तक की सटीकता के साथ, ताकि क्यारियां बनाने या बुआई जैसे काम आप आसानी और सटीकता के साथ कर सकें। इसका उच्च क्वालिटी डिस्प्ले यूनिट खेती के ऊबड़-खाबड़ कामों में भी आपको सभी जानकारी आसानी और सरलता से देता है। इस डिस्प्ले यूनिट पर ऑटो ट्रैक के सभी कामों का पूरा विवरण मिलता है, जिसकी सहायता से आप सभी काम आसानी से कर सकते हैं। इस डिस्प्ले यूनिट की विशेषता यह है कि कड़ी धूप या कोहरे में भी आपको जानकारी आसानी से दिखाई देती है। इसका ऑटोमेटेड ऑटो ट्रैक स्टीयरिंग बिना हाथ लगाए ट्रैक्टर को पहले से तय किए गए मार्ग पर स्थिर रखता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि यह टेक्नोलॉजी प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ एक बड़ा कदम है, जो आप। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो डिस्प्ले है, ये भारत के इंजीनियर ने भारत में भारत की कंडीशन को देखते हुए रखा है, क्योंकि सब जगह केबिन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। भारत में ओपन प्लेटफॉर्म होता है, जहां डस्ट, हीट, सारी चीज़ भरपूर मात्रा में है, और टेम्परेचर कई बार 48 डिग्री से भी ऊपर जाता है। तो उसको कैसे ध्यान में रखते हुए इस टेक्नोलॉजी को, इस डिस्प्ले यूनिट को बनाया जाए, वो हमारे इंजीनियर्स ने यहाँ पे बनाया है। और अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा न्यूज़ में, श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारी इस फैक्ट्री का, पहले हम रेंटेड फैसिलिटी में थे, किराए के बिल्डिंग में ये फैक्ट्री चलाते थे, बड़ा
फैक्ट्री था लेकिन किराए पे था। अभी हमने स्वयं की फैक्ट्री खरीद ली है और उस पर नए एकदम मॉडर्न फैक्ट्री का निर्माण किया है, जो माननीय फडणवीस जी ने उसका उद्घाटन किया था। मैं आप सबसे यहाँ पे आमंत्रण भी देना चाहूँगा कि जो भी इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हों, ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे बनते हैं, या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे बनते हैं, वो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू शोकेस दीज थिंग्स टू देम। गोइंग फर्दर, के लिए मैंने अभी एवरी सीड काउंट की बात की कि हर बीज महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक मीटरिंग मैकेनिज्म जो कि जॉन डियर के इंजीनियर्स ने डेवलप किया है, इससे कहीं पे भी दो बीज एक साथ नहीं गिरेंगे और कहीं पे भी मिस नहीं होगा कि पता चला हर, जैसे मान लीजिए 1 फीट पे एक बीज गिरना चाहिए तो पता लगे एक मिस हो गया और 2 फीट पे एक गिर रहा है। सो देर आर नो डबल्स and there are no misses in this technology. So I'm going to show you that. Exact emerge from other planter row units. As you can see, there's no seed tube. Know what else you don't see? Seed rolling in the trench. We replaced the seed tube with a new delivery cartridge, the heart of this revolutionary planter technology. Inside, you'll find the brush belt, which delivers seed directly into the trench on a dead drop, with no roll, at up to 10 miles per hour. Each seed is carried by the brush belt, but not before passing by our all-new seed sensor. Think of it as another set of eyes where you need them most. Population, singulation, spacing information, it's all gathered at the sensor. Every precious seed is carefully spaced and carefully placed. The new bowl-shaped disc singulates your seed, while the concave shape allows the brush to grab each one effortlessly. Watch how these paddles push seed into the center of the brush belt so you can feel confident knowing there's a secure handoff every time. And thanks to the improved brush style doubles eliminator, only one seed rests in each hole before the disc hands it over to the brush belt. This allows you to enjoy the highest possible singulation. Of course, this high-efficiency meter system wouldn't be complete without a superior vacuum. That ensures the disc holds the seed tightly before it's passed on. Check out the new hopper design that helps you get the most of your seed pool by maintaining target seed population on slopes of up to 15 degrees in any direction. But there's more. 2 independent electric motors. खास बात क्या है यहाँ पे? आमूमन हमारे ट्रैक्टर बीज बोते वक्त 5 से 7 किलोमीटर की रफ्तार पे चल रहे हैं। यहाँ पे बीज बोते वक्त विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर की रफ्तार 10 माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फ्लॉलेसली बराबर जहां पे गिरना है वहां पे डिस्टेंस, डेप्थ सब मेजर्ड। ये इंजीनियर्स की कमाल है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने दुनिया को दी है और शीघ्र ही हम इसको भारत में भी लाना चाह रहे हैं। मैंने सस्टेनेबिलिटी की बात की कि जहां पे हमको ज़मीन, पानी और पर्यावरण का ख्याल है और ये अब महत्वपूर्ण होती जा रही है सारी इकोनॉमीज़ में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो होंगे, ऐसी बात हुई है ना, आप लोग ने COP में कमिटमेंट है। सो वी आर ऑल एमिंग टूवर्ड्स दैट एंड हेल्पिंग सेवरल इकोनॉमीज टू मीट देयर सस्टेनेबिलिटी गोल्स। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही यूनिक है, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है। इससे आपका जो फर्टिलाइजर है वो 70% कम खपत में आप 15 से 20% ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। तो जब तक ये भाई साहब अपना काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक टेक्नोलॉजी है, जब डॉक्टर आपको देखता है, आपके शरीर को देख के बता देता है कितना माल न्यूट्रिशन है
या आपकी चाल को देख के बता देता है कि आपकी तबीयत कैसी है, या आपके कुछ पैरामीटर्स को सेंस करके बताता है। ये टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है, जहां पे हम एक एल्गोरिथम के थ्रू ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि प्लांट को कौन से न्यूट्रिशन की कितनी आवश्यकता है, और उसको उतनी ही मात्रा में केवल जड़ के आसपास देते हैं। एक और चीज है कि जब खाना इफरात में होता है तो लूटने वाले बहुत हो जाते हैं उसको, है ना, बिना बुलाए मेहमान बहुत आ जाते हैं, कई बार शादियों में घुस जाते हैं। एक साफा 3 इडियट्स में हमने देखा कि वो 3 लड़के उसकी बहन की शादी में साफा बांध के चले गए। तो ऐसे खेतों में भी होता है। खेत में वीड्स नाम का एक प्राणी होता है जिसको की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्रॉप्स के बीच में उग जाता है, लड़ाई करता है कि मुझे पानी दे दो, मुझे केमिकल दे दो। ये टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ों को बचाती है और प्लांट को डायरेक्टली उस मात्रा में फर्टिलाइजर देती है जिस मात्रा में उसको आवश्यक है, वो न्यूट्रिएंट जिसकी उसको ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली वीडियो चल नहीं रहा है, तो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम. Let me try and see if I can go to the other one. Oops. ये भाई साहब भी वैसे ही हैं. ये खरपतवार को हटाने वाली मशीन है. तो थ्रू इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी हम अच्छे हेल्दी प्लांट और एक वीड में विभाजन कर पाते हैं, और हम वीड को देख लेते हैं इवन इन द नाइट, इवन एट ए स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर प्रति घंटे, और वीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो इस खेत के लिए नुकसानदायक है, और उसको स्क्वायर इंच में टारगेट करके पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड वहीं डालते हैं जहां पे वो है. तो इससे सॉइल खराब नहीं होती है, इससे प्लांट को नुकसान नहीं होता है, और इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है. और साथ साथ आपके फर्टिलाइजर्स की स्प्रे 60% से कम, मतलब जो आप जहां पहले यूज कर रहे थे अब आप 40% में ही स्प्रे कर पाएंगे विद द सेम इफेक्टिवनेस. तो ये दोनों इंफ्रारेड, रिमोट सेंसिंग और एआई टेक्नोलॉजीज से हमने ये दोनों चीज वो की हैं, इस्टेब्लिश की हैं, और इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है. बड़ी इकोनॉमीज में ये चल रहे हैं क्योंकि ये हाई स्पीड मशीन पे अभी हैं. भारत के किसान लगातार इस पे काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट, कि हम कैसे इन टेक्नोलॉजीज को स्केल डाउन करके हमारे छोटे और मध्यवर्गीय किसानों के लिए हम ला सकें. ये एक स्लाइड है जो मैं अक्सर बताता हूं. ये बदलते भारत की तस्वीर है, और ये जॉन डियर के लिए एक बहुत बड़ा, या यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए, या जो स्टार्टअप्स की क्षमता रखते हैं, या जो आईपी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में या इसमें विश्वास रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वो है. अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एग्रीकल्चर टैक्स जो हमारे लिए है, ऑल्टरनेट फ्यूल, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स यूपीआई जो कि ग्लोबली हम लीड कर रहे हैं. ये एक बदलते भारत की तस्वीर है जिसको हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं, और हम यूएस इंडिया रिलेशनशिप को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, हमारे भारत के किसान, हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो कैसे इसका लाभ पा सकते हैं, इंजीनियर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पे हम लगातार नज़र रखे रहते हैं. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब भारत में हम निर्माण करना शुरू कर दिए हैं. We'll check in tomorrow. Have a good one. Thanks. You too, buddy. वहाँ पे किसान अक्सर 10,000 एकड़, 25,000 एकड़, 50,000 एकड़ के मालिक होते हैं. तो उनकी गाड़ियों से आप प्रभावित मत होइएगा, पर ये टेक्नोलॉजी भारत में भी आ सकती है. ये नाइट विजन है. इससे आप इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के थ्रू, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू पता सब कर सकते हैं. Go to field 5 and aggregate all. Mark. Aggregate field 5. Recommendations from agronomist. Phosphorus nitrogen application on ये प्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा है. and
जहाँ पे बीज से लेके खरीदारी तक आपको पूरा सपोर्ट मिलता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। कहाँ पे खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, कब क्या स्प्रे करना है, क्या नहीं करना है, वेदर एडवाइजरी जो कि भारत में शुरू हो चुकी है, बहुत सारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं। They look great. With the weather, prices are up by 10 cents at the elevator. मार्केट में किस क्रॉप का कितना प्राइस है उसका भी अनुमान पहले से ही लग जाता है। और ये काम केवल इंजीनियर्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का टाइम के लिए, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मैं अब तैयार हूँ कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। That's my last slide. Yes. Thank you very much everyone. God bless you all. Once again, Happy Engineers Day. और मैं डॉक्टर गुप्ता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने, हाँ मैं जवाब देता हूँ, बस एक आभार व्यक्त कर दूँ तो कि उन्होंने मुझे कुछ समय पहले बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आप मुझे बुलाना चाहते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल, ऐसी ऑडियंस, और मैं चाहूँगा यहाँ पे कुछ महिलाएं जो बैठी हैं, बेटा आप लोग काम करो, गेट मोर विमेन इंजीनियर्स, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। आप उनके लिए रोल मॉडल हो और आप ही उनका प्रोत्साहन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ, आई वांट टू सी एटलीस्ट 50% सीट्स ऑक्यूपाइड बाय विमेन। थैंक यू वेरी मच। यस सर। सर आपने बहुत अच्छा यहाँ पर हमको नॉलेज दिया। ये एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे दिल में आ गया, जॉन डियर के बारे में, जो सैम्बल शेयर था उसके ऊपर वो डियर का जो चित्र है वो क्यों दिया है, उसका थोड़ा सा बता देंगे? अच्छा, देखिए जॉन डियर हमारे मालिक का नाम है। 1937 में वो एक लोहार थे और मैंने अ प्रोडक्ट विद ए पर्पस दिखाया था, उसमें एक प्लाव दिखाया था। वो जॉन डियर ने दुनिया में पहली बार लॉन्च किया था, क्योंकि जब वो किसानों से मिलते थे, उनकी तकलीफ देखते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि घोड़े के ऊपर भी बहुत भार पड़ रहा है और किसान बार बार झुक के उसको कर रहा है। तो उन्होंने काफ़ी सोचा और स्टील बॉटम प्लाव लाए जिससे मिट्टी आसानी से पलट जाए। तो पहला जॉन डियर नाम उनका है, और जो कि 190 ईयर्स से उनका नाम आ रहा है। बीच में हिरन से ज़्यादा चतुर, हिरन से ज़्यादा स्मार्ट, हिरन से ज़्यादा तेज कोई नहीं है। तो किसी ने कहा नथिंग रन्स लाइक डियर, तो तब से ये जॉन डियर की उसमें डियर का एक चित्र है। पहले डियर ऐसे था, लेकिन अब डियर चढ़ता हुआ है, कूद लगाने के लिए तैयार है। तो सिंबल थोड़ा चेंज होता रहा है, लेकिन डियर इज एज डियर टू अस। थैंक यू। देयर वाज वन मोर क्वेश्चन आई थिंक देयर। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉक के लिए। सर मेरा प्रश्न ये है, ये जो आपने इंच टू इंच वाला बोला था, जिसमें ट्रैक्टर के ऊपर एक रिसीवर लगा हुआ था, स्टार फायर रिसीवर, बोला था कि वो मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। जी जी जी। तो मोबाइल फोन से क्या कुछ ई सिम वगैरह का उसमें प्रावधान है? हाँ, तो हम उसको करेंटली हम सिम के थ्रू कनेक्टिविटी दे रहे हैं, पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे गवर्नमेंट के नए रेगुलेशन से हम एक MTG लगाएंगे उसमें, तो सिम का नहीं होगा, वो सैटेलाइट के थ्रू। आप सबको तो शायद मालूम होगा, सर को ये मालूम होगा कि वी आर नाउ मूविंग फ्रॉम GNSS टू IRNSS, and that will be much more secured and it will allow seamless connectivity. तो ये अभी भी शायद सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता होगा? कुछ प्रोडक्ट्स, बट कुछ प्रोडक्ट्स थ्रू सिम, अलर्ट्स वगैरह हम थ्रू सिम भेज रहे हैं अभी। ओके, बट आने वाले टाइम में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आप बता इंडिया में? यस, बोथ MTG इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें बेस लाइन कनेक्टिविटी के अलावा टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी भी है,
और बेस लाइन प्रोडक्ट वाली कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं हम लोग। तो करेंटली वी आर यूजिंग GNSS, लेकिन वी आर वर्किंग कि हाउ वी कैन बी कंपैटिबल टू नेविक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जी, धन्यवाद। देयर वाज वन मोर क्वेश्चन एंड यस, उनसे पहले पूछ लेते। Sir, this is some odd questions maybe. So ऑड क्वेश्चन के लिए इंजीनियर बना है सर। so actually you have very good relations with various countries. I just want to know your view on this tariff war. देखिए, अगर आप उसको एज ए जॉन डियर पूछ रहे हैं तो मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं एक अमेरिकन कंपनी हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 25 साल में मजबूत ही हुए हैं। किसी प्रेसिडेंट के आने से या किसी ऐसी पर्सनालिटी के आने से पर्सनालिटी क्लैश तो हो सकता है और वो मोमेंटरी होता है, लेकिन जो फाउंडेशनल रिलेशनशिप जो बने हैं, जिसकी बुनियाद पे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, और डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, कुछ समय पहले एडगन कैगन आए थे, उन्होंने यहाँ पे एक वर्कशॉप की थी ऑन रेयर अर्थ, पूना में हुई थी। तो ये टेक्नोलॉजी, उससे टैरिफ का कोई लेना देना नहीं है, इस रिलेशन का नहीं लेना देना है। आज भी 2 गवर्नर्स भारत में हैं, गवर्नर ऑफ न्यू जर्सी एंड गवर्नर ऑफ आयोवा। वो लोग इंडस्ट्री से मिल रहे हैं, वो एकेडमिया से मिल रहे हैं, वो साइंटिस्ट से मिल रहे हैं, वो रिसर्चर से मिल रहे हैं। तो अपना काम हो रहा है, ऊपर की बातें ऊपर की हैं, उस पर टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा दिन ये सब चीज़ रुकती नहीं है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का। यस सर। Yeah, actually, in India, there are not big farmers. Okay, there are small farmers, and with the population, you know that the property gets divided and divided. The खेती बहुत small होते हैं. Okay, John Deere like products for agriculture investment becomes very big for small farmers. Okay, so what is your technology which can help these small farmers? Why? Because the manpower availability for small farmers is not there. Correct. Because many people have gone to cities for jobs and things, and there are no people to work in small farms. Okay, so due to that, the farming dies because no small farmers could cultivate. Okay, and they can't afford to have big machineries. So is there any technology things which you are considered for that? नहीं, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब कि अनफॉर्चुनेटली किसान के बच्चे, किसान और आप सब के बच्चे सब शहर जाके काम करना चाहते हैं, जैसे हम आए हैं, लेकिन हम अब बहुत साल पहले छोड़ के आ गए थे। लेकिन आज 2 चीज़ें किसान के बच्चों को अभी भी प्रभावित करेंगी। एक, उनके हाथ में अगर टेक्नोलॉजी दी जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी सेवी हैं, जो जेन जी बोलते हैं हम जिसको, है ना, दे वांट टेक्नोलॉजी, दे वांट न्यू थिंग्स। और मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ बहुत से स्टेट्स में, जहाँ पे यंग फार्मर्स हमारे पास आते हैं और टेक्नोलॉजी का एम्ब्रेस करते हैं। दूसरा, आपकी बात सही है, स्केल डाउन करना टेक्नोलॉजी भारत के हिसाब से बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 20-22 वर्षों में हम टेक्नोलॉजी स्लोली अपग्रेड करते आए हैं। सबसे पहले पावर स्टीयरिंग, जो कि नॉर्म नहीं था, ऑयल इमर्स डिस्क्रेट नॉर्म नहीं था, पावर रिवर्सर नॉर्म नहीं था, परमा क्लच नॉर्म नहीं था। अब हम टेलीमैटिक्स और ऑटो ट्रैक की बात कर रहे हैं, वो भी नॉर्म नहीं था। तो धीरे धीरे हमको ये टेक्नोलॉजी लानी है। जहां तक फार्मर के उसका सवाल है, टेक्नोलॉजी ओनरशिप और टेक्नोलॉजी एक्सेस में फर्क है। आप टेक्नोलॉजी ओन ना करें, लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी एक्सेस है थ्रू पे पर यूज मॉडल, तो भी किसान को लाभ पहुंचता है। तो हम दोनों तरीके से काम कर रहे हैं कि जहां किसान टेक्नोलॉजी सेवी हैं और बेसिक टेक्नोलॉजी में आके टेक स्टैक से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। अन्यथा किसानों को थ्रू अ सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी एक्सेस दे रहे हैं, ताकि वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, भले ही वो टेक्नोलॉजी ओन ना करें। दैट्स आवर गोल एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर इन इंडिया। थैंक यू।
So first of all, thank you for an excellent talk. So Thank you, sir. I don't at all regret having invited you to come for our I engineers. was worried Day. about that. No, absolutely not. And I think our colleagues will probably echo the same view. So I had two questions. One is very related to what my colleague Suresh Kumar asked just now, that for small scale farming, large mechanized techniques may not always be very useful, though you gave ways out for it. But it looks like nowadays more of the smaller, nimble machines, and a lot of people are doing many of these things with drones. Yeah. And so I was just wondering whether John Deere is looking into really new technology different than the traditional tractor-based machines for doing these things. True. That was one question. Second one was, when you introduce machines with higher degree of technology, they're obviously more expensive. And how do you find the Indian market responding to that, given the fact that there are simpler tractors and simpler machines available, Correct. which the farmers may often prefer कि भाई हमको इतना complicated, costly machine नहीं चाहिए, हम simple tractor से काम चला सकते हैं. तो do you find that as a problem in the Indian market? जी जी. तो मैं पहले आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि देखिए आज वैल्यू ड्रिवन मार्केट है, नॉट प्रोडक्ट ड्रिवन, और वैल्यू में इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं. तो जब आप इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो टेक्नोलॉजी एम्ब्रेसमेंट बिकम्स ईजियर. इट इज कॉस्टली बट देन इट स्प्रेड ओवर दी अक्रॉस द वैल्यू चेन. तो हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि हम जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, are we giving a standalone technology or it actually helps him spread over the complete value chain where it lives become easy. एक और डाटा पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि भारत सबसे ज़्यादा कॉटन, राइस, मेज और वीट का ग्रोअर है. नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पे आता है. लेकिन अगर पर एकड़ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं हम, तो 60वें स्थान, 70वें स्थान, 100वें स्थान पे है. अब इसकी वजह से, और उसका एक मुख्य कारण है कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं रहा है. टेक्नोलॉजी भी जिनके पास रही है वो स्टैंड अलोन रही है, और स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी में समस्या ये होती है कि अगर पैदावार ज़्यादा हो गई तो किसान का नुकसान है, पैदावार कम हुई तो भी किसान का नुकसान है. तो उसको वैल्यू चेन से इंटीग्रेट अगर हम करते हैं, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, देन द बेनिफिट इज सीन, और छोटे बड़े किसान थोड़े से नलीफाई होते हैं उसमें. भारत सरकार ने एक और बहुत अच्छी बात की है, आपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की सुनी होगी, which actually gets numerous farmers of small together where they can do much more on shared basis. ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने में काफ़ी मदद कर रहा है, और काफ़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं नासिक के ग्रोवर्स हों या और भी अन्य जगह, कर्नाटका में बहुत तेजी से ये पॉपुलर हो रहा है. तो आई एम सीइंग दैट दिस इज चेंजिंग द ट्रेंड. And then your second question was, sir? The first question was about other technologies which can be for small farmers. हाँ, okay. So yes, there are other technologies. Drones जैसे आपने बात की, startups बहुत सारे हैं इस स्पेस में, लेकिन दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है. मैं ड्रोन्स की बात बाद में करूँगा. सबसे पहली चीज़ है रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की. क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑपरेशंस के विंडोज छोटे होते चले गए. जो पहले किसान 1 महीने में करता था, आज उसको 10 दिन में करना है. तो रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कंसिडर हो रहा है. ड्रोन्स, यस, एक नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ड्रोन्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रमोट अभी नहीं कर पा रहे हैं. दे आर जेनरिक, कि आपने ड्रोन ऊपर से उड़ाया, उसने चारों तरफ स्प्रे कर दिया, उससे प्लांट में चला गया, लेकिन उससे बाजू के किसान में भी खेत में भी नुकसान है, एनवायरनमेंट भी नुकसान है. तो ड्रोन टेक्नोलॉजी विच हैज़ मच मोर प्रिसाइज, लाइक सी एंड स्प्रे एन एग्जैक्ट शॉट, इज व्हाट विल मेक डिफरेंस, बिकॉज देन मशीन रन टू एन एयर रन इक्विपमेंट से वो कर सकते हैं. तो दोज टेक्नोलॉजीज आर अंडर डेवलपमेंट, एंड आई थिंक once it matures a little bit, we will see छोटे मध्यवर्गीय किसान through. But is John Deere investing in these technologies or they still? चूंकि ड्रोन सर अभी बहुत सस्टेनेबल नहीं है, we are not very excited about it right now. कि हम नहीं चाहते कि
ये अगर खेत इनऑर्गेनिक है और बाजू के 2 खेत ऑर्गेनिक है तो पिल्फरेज कुछ हो और हमारे वजह से उन किसानों को नुकसान हो तो उसके लिए हम थोड़ा सेंसिटिव हैं एज जॉन डियर। हालांकि बहुत सी कंपनियां इसको नज़रअंदाज करती हैं लेकिन हमारी कंपनी इसकी अनुमति नहीं देती है। तो हम लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू हाउ टू बी मोर प्रिसाइज उस पर काम करेंगे हम और कर रहे हैं इस समय। ओके, सो वी आर 5 minutes अप एंड लास्ट क्वेश्चन ले लें सर अगर आपकी इजाजत है जेंटलमैन। आज तक आप देख रहे हैं 7 to 8 years पहले जितना टेम्परेचर था तो अभी 45 डिग्री टेम्परेचर इधर पहुंच गया है। तो आपकी कंपनी एनवायरनमेंट के बारे में क्या आपका क्या कोशिश है, एनवायरनमेंट के लिए आपका क्या योगदान है? तो आपने जैसे देखा हमारी सारी मशीन, हमारी सारी पद्धति सॉइल, वाटर और एनवायरनमेंट के प्रति वचनबद्ध है। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे सॉइल डिटोरिएट हो, क्योंकि आज तो हम पैदा कर लेंगे लेकिन आज से 20 साल बाद अगर वो सॉइल खराब होती है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। पानी ट्री प्लांटेशन में कुछ अच्छा आप उस नजर यस ऑफ कोर्स मैंने स्लाइड्स दिखाई कुछ और। आपने जो मशीन बोला था वो मशीन का प्राइस क्या रहेगा डिगिंग और इसका और वो कुछ आप CSR फंड के माध्यम से हमारे जो ग्रुप है उसमें दे सकते हैं क्या? वो थोड़ा CSR फंड से हमारा भी एक रजिस्टर ग्रुप है। थैंक यू। हम जरूर आपसे बात करेंगे इस गोष्ठी के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद उसको अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू। Hello. If there are no questions, so I think. Thank you. Yes. Thank you very much. Yes. Thank you, वाशने साहब। आप यहाँ पे आए क्योंकि आप because of some other commitments he is moving to his office, so he may not be available till the vote of thanks. So I would thank you very much. You have come here. You have given your talk in all the aspects of the society as well, and in the industry, engineering, everywhere you have spread out. So very, very thank you to you. And yeah. Thank you, Thank you. God bless you. Thank you, sir. Thank you. So there is a tea break now. So we will move for the tea. So tea has been arranged for everybody outside. So we are running quite late. So I would request everybody, please return to your chairs in 10 minutes. Thank you.
So the next talk is on the quantum computers by Professor Vijay Raghavan Rajamani. I would now invite on the stage Dr. Suresh Kumar to introduce today's the second talk speaker. Yeah, good morning, everybody. Year 2025 is the International Year of Quantum Science and Technology. This is declared by United Nations General Assembly, and we are delighted to have Dr. Rajamani Vijay Raghavan, our associate professor from condensed matter physics and material science from Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, on this Engineers Day as our guest speaker. Professor Vijay Raghavan is the head of the Quantum Measurement and Control Laboratory and leads the technical group on superconducting quantum computers. Under the National Quantum Mission, and several initiatives has been taken in the design to create small and medium-sized quantum processors. Regarding his career, like St. Stephen College, Delhi University, he has done his BSc Physics in year 1996 to 1999. Later BA Natural Science from University of Cambridge in 1999 to 2001, and his PhD from Yale University in Applied Physics 2001 to 2008, and his postdoctoral from University of California, Berkeley 2008 to 2012. He has been awarded Ramanujam Fellowship for the period of 2013 to 18, and as a Fellow of Indian Academy of Sciences in Bangalore. In July 2025, Pancharatnam Prize for Excellence in Quantum Science and Technology was granted by Government of Karnataka. Today we have Professor Vijay Raghavan will speak on the topic of quantum computers. What is it, what can it do, and how to build one. With this, I welcome Professor to deliver the talk. Thank you very much for the kind introduction, and thank you to Director NCRA and Dean NCRA for inviting me here. This is, I think, my second visit to GMRT, but the first time giving a talk. So wish you all a happy Engineers Day. भी थोड़ा volume कम कर सकते हैं? Yeah, wish you all a happy Engineers Day. I'm a physicist by training, but my PhD is actually in engineering and applied sciences. So I've always been a wannabe engineer. Working close to technology has been one of my passions. And I think any experimental physicist has to be an engineer. Otherwise, nothing will happen in the lab. So today I'll try to tell you about this fascinating new technology, which I'm sure you've been hearing about for quite some time. Even in India, there's a lot of activities going on, but I will try to give you an overview of why this technology is important, what it is about, and what are some of the developments happening around the world and also in India. So feel free to interrupt me if something is not clear. I'll be happy to clear it right away. So yeah. So before we jump into quantum computing, we just have to remember that the way we do information processing today, which is now been given the name classical computing, is very, very successful. It works very well. It's based on storing and processing information in the form of bits. One important thing to remember is that this information is stored in some physical property of the system you are playing around with, whether it's a compact disk or a DVD, whether it's your magnetic disk drive or transistors inside your computer.
two physical states are used to represent 0 and 1. That's how you need some physical entity to store this information so that you can process it. The information is the same, but just the physical mechanisms with which they are stored changes from one medium to another medium. Now, when you do this, you are able to use Boolean logic, because that's applicable to information stored in this form of 0 and 1. And using electronic circuits, we can manipulate these numbers and use Boolean logic to do computation. So, you have your universal NAND gate. You can build these. Is there a receiver? Maybe I have to stand here. Yeah, you can build them using electronic circuits, and then later on integrated circuits, and now we can pack these billions of transistors in a very small volume, which are the modern quantum processors, modern classical processors. And as I said, this has been very, very successful. We have powerful machines in our pocket. The laptop I'm using to present all of this works really well, and we have done amazing things using this technology. But it turns out that there are actually still certain types of problems which machines like this can actually not handle efficiently. Not today and not any time in the future. And that's got to do with how these machines do computations. Some fundamental principles which are being used to do the calculation. So what are these problems? So here's a picture of an aspirin molecule. It has 9 carbon atoms, 8 hydrogen atoms, and 4 oxygen atoms. Doesn't seem like, to the uninitiated, it doesn't seem like a very complex molecule. We of course know of proteins which are much, much bigger. But turns out that even modeling this kind of a system on a computer using the full laws of quantum physics which describe how atoms and molecules work is nearly impossible today. We have, of course, quantum chemists who do approximations, try to figure out efficient ways of calculating such things. But if you want to really understand in the most gory detail, or if you say want to do a brute force simulation of such a system, our computers cannot handle them at all. Okay? And this was recognized quite a while back in the days of Feynman. He realized that doing quantum mechanics on a classical computer is very hard. It doesn't scale well with the size of the problem. Right? There are also other mathematical problems which have nothing to do with quantum mechanics, which also are very hard. For example, if I take 2 large prime numbers and multiply, this is an easy problem. Anybody can do it. You can even do it by hand if you spend some time. But the reverse problem, that is, if I give you this number and I ask you to find out which 2 numbers were used to multiply to get the product, this is a hard problem. Now, the numbers written here are very small, so any computer program can do it. Mathematica will solve it in no time. But as the number becomes bigger and bigger, the time it takes to solve this problem grows exponentially. And it is in fact this fact which is used to encode our data when we do secure communication over the internet or most other links. They use this idea that in order to break the encryption, you need to know the individual factors, but you don't have access to it. You only have access to the total, the product here, and you don't have any computers which can solve this efficiently, so your encryption is safe. So the question is that, is it then possible to build a computer which runs by different rules, and particularly the rules of quantum mechanics? Okay. So what exactly is this rule? It's actually a very simple aspect of quantum mechanics which we use for quantum computing, which I will cover in the next couple of slides. Okay. Here is a simplistic picture of an atom and an electron from our high school days. We imagined electrons to be orbiting the nucleus. So this would be a hydrogen atom with 1 electron. Of course, we know that this is not an accurate picture, and we are talking about atoms because naturally quantum mechanics was introduced to understand the behavior of atoms. We now know that these electrons don't go around in these circles, but instead
they have these probability distributions. You cannot really say where the electron is, but you can only calculate the probability distribution of where it can be found. And these different shapes represent the shapes of these so-called orbitals for different energies and other different quantum numbers. Okay, so we will slightly modify our picture and make our atom now with fuzzy orbits, just to say that we don't know the electron, but it is just as a cartoon. But now we use this idea to say that if I use the fact that if the electron is in the closest orbit to the nucleus, that is the lowest energy state, I now decide to label this as my physical state 0. Just like I said earlier that magnetic disks or CDs, they have different physical states which represent 0 or 1. I'm just going to use this very complicated way of using the energy of the electron as my marker for this state. Now, of course, written 0 slightly differently to emphasize that this is a quantum state, and that will become clear in just a bit. So now if that is state 0, I can use the electron in the next orbital, the first excited state, as my state 1. So I now have a way of storing 0 and 1 in a very complicated way inside an atom by controlling the energy of the electron in it. Right? Now, so far, this looks no different than what we discussed before. I have 0 and I have 1. What is the difference here? The difference comes from the fact that these are now quantum mechanical states, and because these states are solution to a linear wave equation, if 0 and 1 are a solution, so they are possible states, any linear combination of those states is also a possible solution. And this is where the first major difference comes in. This idea that you can now prepare the system not only in 0 and or 1, but in a combination of state which we may write down as 0 plus 1, but also as 0 minus 1. This plus and minus is where the confusion comes in when we start thinking about in regular language. We like to call it that the qubit is in both 0 and 1. And qubit here refers to the fact that it's a quantum bit now because these superposition states are allowed. Okay. Now, what this means is that when the system is in a state like this, we cannot say the energy of the electron corresponds to the lower value or the higher value. It's in some combination. Okay. But this is where the first mysterious aspect of quantum mechanics comes in. But experimentally, we know exactly how to do this. Mathematically, we understand what this state means. It's only when we try to represent this in common language that we have trouble understanding that. Okay, now, this is a whole different line of discussion on the interpretation of quantum mechanics. We can discuss this over lunch. I will move on with this thing, right? So, because these are superpositions, you can have different signs. That's why 0 plus 1 is also a possibility and 0 minus 1 is also a possibility. Okay. So, the most general way you can write down is now you have a quantum two-level system, and you can write down a combination of 0 and 1 with these coefficients here. And these coefficients, the way they are written, it creates a way to represent them on the surface of a sphere, which we call as block sphere. So, you can think of theta and phi as the latitude and longitude on the surface of a sphere like we have for the Earth. So, just like one latitude and one longitude number uniquely defines a point on the surface of Earth, similarly a value for theta and phi will uniquely define a point on the surface of this sphere. So, of course, ground state or 0 corresponds to one of the poles, the excited state corresponds to another pole. These are the so-called classically equivalent positions, but then a state on the equator is of the type where 0 and 1 have the same coefficients. So, this is something like 0 plus 1 over root 2. And if this is 0 plus 1, the arrow pointing in the opposite direction would be 0 minus 1, just to give you an example. So, there is a phase involved as well. So, what you see now is that with just one qubit, there are actually an infinite number of positions you can create, because I can always break up my surface of my sphere into infinite number of points. So, it looks like there is infinite possibilities in storing this. And this is often a misnomer and a misunderstanding when people say that a single qubit can actually store
a lot more information than a single classical bit. That's actually not correct, because any useful memory is only useful if after storing it, you can recover that information, right? And that's where the second weird aspect of quantum mechanics comes in, is that if I prepare a state like this on the equator, then when I try to measure, I try to find out what is the energy of the electron so that I can know what that state is. You find that the answer is random and gives you 0 or 1, in this case with equal probability. So this sounds terrible, right? It's like I made a presentation in the morning, and by the time I came here and I opened my PowerPoint, I have a random string of zeros and ones, which has nothing to do with what I prepared. Okay? So this is something to keep in important, that actually 1 qubit only stores 1 bit of information if you're thinking in classical terms of information recovery. So it's 50% here because this vector is exactly in the middle. If this was closer to 1, you will have 1 coming out with larger probability and 0 with less probability, and vice versa. Okay. So you have the possibility of encoding infinite possibilities, but the result recovery is still only 1 bit. Okay. So this is something to keep in mind. So then what really makes such a system different and potentially a lot more powerful than how we have been doing computation till now using conventional computing? But because I can put this in a system where it can be in a superposition of such a massive number of states at the same time, is what makes it different than a regular classical computer. This is also the reason why doing quantum mechanics on a classical computer is very, very hard or almost impossible. Why? Because if I want to represent this state in a regular computer, I need a memory which can store that many coefficients. There is no computer on the earth which has that kind of memory. Things break down much before, at around 50 to 60 qubits, when you run out of memory that is available on earth. But you just need 300 qubits to represent that state. Okay? So so these two things are connected. The fact that classical computers find it very challenging because of the very large, we call this the Hilbert space, is also the reason why a quantum computer can become very powerful in certain areas. Okay. So just to summarize these thoughts, if you have n classical bits, you can put it in one of the 2 to the n possible states. But if you have n qubits, you can put it in a combination of all the 2 to the power n possible states. And then your algorithm, the sequence of operations which manipulates these qubits, is where the magic happens. It can sort of play around with these extremely large Hilbert space at the same time. This is the new resource you have in a quantum computer. And then you still have to do it properly so that at the end of the day, you only have 300 bits to measure. Right? If this was a 300 qubit system, at the end of the calculation, you still have to get the answer. You have only 300 bits. So you have to do this, and you exploit this idea of parallelism and interference, because this is a wave function. These functions can interfere with each other. So your algorithm has to do this. Now, how one does that in a regular sense, in a most general sense, is not a very easy task. There are very few powerful algorithms known. New ones are being discovered. But in order to know, there's no general black box where I say I put in a classical problem and out comes a quantum algorithm which will run better or faster on a quantum computer. This is one of the challenges which people are working on. So even knowing when and how to use a quantum computer efficiently is an active area of research. Okay. So moving on, if we now want to use such things, we need to build a hardware which can support such states, right? So what's the main problem? The problem is that any physical system we use to create these states, they are not stable. So for example, if we are using an atom and its energy states, we know that an atom in an excited state wants to relax to its ground state and emits its energy. This is exactly the same problem that if I created some letter in the morning, by the time I come to the office, all the bits have gone to 0, I have lost my information. So this process
one of them we call as relaxation will take any state and then bring it down to 0. This process is known as relaxation, and in NMR language, the characteristic time scale over which this happens is called the T1 time. It's random. You don't even know when this process will happen. So again, it sounds terrible, right? I store something and after some time it's lost. But because quantum bits also not only are 0 and 1, they also have the superposition, the phase also matters, which means that if I prepare something pointing in this way, I want it to stay in that position until I do some deliberate manipulation on this. But there is another kind of noise called dephasing noise, which causes this phase to wander. So the system actually slowly changes its direction with time randomly, and over some characteristic time scales, it will become completely randomized. You will have no idea which way it's pointing. That is also information loss because it is not the same state I prepared earlier. This is called the dephasing time. So given these two, the situation again seems hopeless. In fact, this is what the early days of quantum computing looked like. People said, okay, we are never going to make. What this means is that you have to finish your calculation in a very short time before any of these random processes happen. Because if you remember from the previous slide, the calculation is some kind of a dance where these states are changing, but in a very precise, calculated way as per your algorithm. But noise, like relaxation and dephasing, is causing them to move in a random way. So if the randomness wins out, your final result is complete garbage. So in order to avoid that, you have to do the calculation in a very short amount of time, which means you're very limited to very few things. This is the story of most quantum computers which exist today. We are still in this regime where we try to finish the calculation as soon as possible and hope that we can make some meaningful results out of it. Okay, so this is called decoherence, and it's a major challenge, but thankfully there is a solution, at least theoretically it exists, that there is a way to fix this problem. Now here's a sort of a corrupted image. Do people recognize what this image is of? Anybody? This is amazing. The last time I gave this talk, somebody said Dr. Kalam. I don't know how they see it. It's as far away as from Dr. Kalam, but I've been trying to stare at it and see how people see Dr. Kalam in this. But maybe it's because of the engineer. It's Marilyn Monroe. There's the eye, there's the lips, there's the hair a little bit, right? But, okay, maybe your error correction capabilities were not so good, but the idea here was that even with a fairly corrupt image, we are able to sort of see the underlying pattern and recognize the image, right? The problem with quantum systems is that it's like this point on the surface of Earth, right? That's the defined quantum system, but over time, it randomly moves about and goes somewhere else. So there is a theory called error correction, which uses multiple imperfect qubits to create an error-free qubit, which is given the name logical qubit. So instead of storing one qubit worth of information in one physical system, you distribute the information amongst multiple physical systems. And then if you do that very carefully, so here those qubits are sort of shown with these red things here, there are 9 of them. Even if they sort of wiggle around and do some weird things, the overall state is stabilized. And for this, you have to actively check if these individual qubits have done something wrong and then fix them, so that the overall information is continued. So there's no point in using a small quantum computer for anything meaningful. For education, for technology development, yes. But for commercial and real value, they are not going to be useful. Okay? So you have to get this technology to work at sufficiently large number of qubits. What does large mean here? Well, the scale where classical computers cannot mimic the quantum computer. So beyond 50, beyond 100. But again, you need these 100 qubits to be error-free. So if you need 10 qubits per logical qubit, then you need something like 1,000 qubits.
but that again depends on the technology. There are some approaches where you may need 1,000, 10,000, or 1,000,000 physical qubits to make one good qubit. Then we are talking about tens of millions of qubits you need. So that's where the engineering challenge lies, that how do we build that kind of a system. Okay, and then of course quantum error correction is very, very important. Now let's look at the actual physical system where this hardware is implemented, right? So there are several ways of doing it. One of the earliest ways was to actually use atoms. So this is called the trapped ion system. So you remove some of the electrons, they become ionized, and then you can trap them in vacuum using electromagnetic fields, and then use lasers to manipulate them. The picture shows two such ions fluorescing. And in fact, the fluorescence is what is used to detect whether the ion is in a 0 or a 1 state. So these are electronic states of the ion one uses. One can also use the spin of an electron. So the electron has a spin which behaves like a magnet. So whether the magnet is pointing in one direction or the opposite direction with reference to a magnetic field can be used as state 0 and state 1. And here the electron is actually confined in a 2D electron gas in a semiconductor chip. And with electrodes, you can actually create the electromagnetic fields to confine effectively a single electron and then manipulate them. But the technology I'm going to talk about today is the one which is called the superconducting circuit. It is basically a film of superconductor like aluminum deposited on a substrate like silicon or sapphire. The difference is that these are huge compared to individual ions or individual electrons, right? There we are talking about angstrom nanometer scale. Here we are talking about microns and millimeter scale. Yet under the right conditions, this electronic circuit has the same properties like that of the atom we discussed, in the sense that they have energy levels which you can access and program. There are many other platforms as well. You can use light. This is making a big comeback. You can also use neutral atoms or cold atoms. There's also something called topological qubits. Many of you must have heard the Microsoft announcement from some time back, though it has been highly controversial and people have opposed the results. And there are also ways of using diamond and something called nitrogen vacancy centers in diamond to create these qubits. These are all upcoming technologies. They are all good at certain things and not so good at others. Currently, the three leading platforms are this one, where probably the superconducting circuit and trapped ions are the most advanced, and now the photons are coming up in a big way. Okay. So now what is a superconducting circuit? Okay. Here's a picture of just a pendulum. Now a pendulum has this property that if I let it go, it will oscillate with a certain period. Okay. The superconducting qubit is basically an electrical pendulum. It is created with two components. One is a familiar looking device called the capacitor, and the other one here, the symbol shown here with the cross, and there are two of them in parallel, is called a Josephson junction. It's a tunnel junction which is created out of two films of metal with a thin insulating barrier in between. Okay. The difference is the metal is a superconductor, and electronically or electrically it resembles an inductor. So this is nothing but the good old LC oscillator, right? So if I choose the inductor and capacitor, it will resonate at a particular frequency. But in the quantum regime, it behaves differently, and we'll see that. So here's a picture of such a device. So notice the size scale. This is almost a millimeter in size. Right in the middle is this, zoom in, is this square loop here, which is basically this circular thing. And these two small regions here, that's where the two films overlap, and that's where the Josephson junction is formed. And it's that element which gives you the inductance. By putting it in a loop like this, you can put a magnetic field inside this and tune the effective inductance. So it's like a tunable inductor. So you can tune the frequency of this oscillation. And then these two big pads are like a planar version of a parallel plate capacitor. So the electric fields between these two will give rise to some effective capacitance, and you can tune these numbers. Okay. So the qubit is nothing but oscillations of this oscillator with different energy. So if you take it down to the lowest energy possible, which is the ground state when that has no energy, that we call as 0. And then if it can have the minimum amount of energy which is allowed by quantum mechanics, so one of the other properties of quantum mechanics is that these energy levels are quantized, you can only add energy in discrete steps, then that is basically the 1 state. Okay? In very simple terms, an oscillator which has no energy is state 0,
and the oscillator with some energy is state 1. That's it. Yeah. What sets the quanta is? Yeah, I will tell you in the next. Yeah. So here is now some more information. The typical inductance value is around 13 nanohenry. The typical capacitance is around 70 femtofarad. And this gives rise to a frequency which is around 5 gigahertz or so. This is tunable to some extent within a few gigahertz. And what is shown here is now the quantized picture of that. Now, if you remember, in high school when we studied the pendulum, we calculate the time period of the pendulum, right, which is dependent on L and G. But that's actually an approximation. We do this sine theta equal to theta approximation, which means for small angles, it behaves like a harmonic oscillator. But a pendulum is actually a nonlinear oscillator. If I took it and made it oscillate with much wider amplitude, its time period changes. And that corresponds to this kind of an energy potential, which is cosine in shape instead of a parabolic shaped potential. And these energy levels are the quantized energy levels. But the spacing, as you are asking, is given exactly by the frequency of the oscillator. So the energy spacing is given by the frequency of the oscillator, but because it's nonlinear, and the nonlinearity comes from the fact that it's a Josephson junction, not a linear inductor, these energy levels keep shrinking as you go up. So that's why I can address the two lowest levels by just using the right frequency to excite them, because that's actually how you manipulate these things, right? And then the next level will be slightly smaller, so your drive can be detuned from that. Now this frequency can be converted into an energy and then into a temperature, and that corresponds to a very small temperature of 250 millikelvin or 0.25 Kelvin. And this is the reason why, in order to use these systems as a quantum object, we have to operate at very, very low temperatures, such that thermal energy is much, much smaller than the energy difference between the ground and the first excited state. The reason is, if you had operating at a higher temperature, it will populate all of these levels with a Boltzmann distribution. And that's random. We don't want that. We want to know precisely what the quantum state is. So we have to go to these low temperatures so that the system is predominantly found in what's called as a pure state. And then we also want these oscillators to retain their energy for a long time. So remember, I told you earlier that qubits will decay from the excited state to the ground state. The equivalent picture here is if I set a pendulum in motion, it stops after some point of time. That's because of friction. The friction takes away the energy. In the case of electrical oscillators, that friction or dissipation comes from the resistance in these circuits. So your inductor should have no resistance ideally. Your capacitance should have no conductance ideally. And that's how we have to use superconductors, and we have to use special techniques to make these oscillators as low in dissipation as possible, so that when we prepare the system in the excited state, it stays there for as long as possible. Okay. So we expect that the system will be in the ground state if we wait for a long time, and then that gives us a starting point to make the manipulations. Okay. So this is just about the architecture of how we actually measure it. So I'll very quickly go through it. You take your qubit, which is a nonlinear oscillator, and you couple it to a linear oscillator. And this kind of a system, by choosing the frequency of the qubits oscillation and the cavity, which we call the measurement cavities oscillation, to be different, we reach a situation where you get two different resonance curves for your cavity LC oscillator. This is how we actually detect. So from the engineering perspective, the measurement of the qubit state is nothing but to measure the resonant frequency of this LC circuit. Depending on whether this system is in the ground state or the excited state, it makes the overall frequency of this, as shown by this resonance curve, shift slightly. So this is showing you phase as a function of frequency, as if you scatter energy from this microwaves from this thing, again usually around 7 gigahertz or so, you get this resonance curve, and it will be shifted depending on whether the system is in the ground state or the excited state. That's actually what you have to detect in a real experiment. So we just send a microwave pulse at somewhere in the middle and look for a phase shift, which tells us whether the system is in the 0 or the 1 state. So qubit state measurements are implemented by a microwave pulse and measuring
its phase shift. So on the technical side, this is what we are actually doing. Okay. Once you have these ingredients, you can start doing manipulations on the system. So one of the most common things you do is, in order to change the state of this qubit, you have to send microwave radiation which is in resonance with that oscillator. Just like if you want to energize any LC oscillator, you have to drive it on resonance. So when you do that, but because this is a two-level system, something very different happens. So you send in a pulse at omega 01, which is this frequency, and then you send it for a certain amount of time, and then you send the microwave pulse on the measurement cavity to detect the state, and you repeat this many, many times. Because remember that ideally at the end of each measurement, that phase should have two values corresponding to 0 and 1. So you do an ensemble measurement and you create a probability, and as you change the time, you see that this probability of being in the excited state, which is basically one of the phase values, goes from one value all the way to the other value, and then it starts to oscillate. So this is the expected behavior for a driven two-level system. But practically, this is what we need to know how to create or put that qubit in the state. You choose the right pulse of the right amplitude and time to stop this process somewhere along this way. Because here it is in the ground state, over there it is in the excited state, and somewhere exactly in the middle it is in the equal superposition state. And at other points it has different superpositions. Okay, so this gives you the basis for controlling your electronic qubit and put it in different states. So this phenomena is called Rabi oscillations, and you have several controls to make it work. The amplitude, how strong the drive, determines the frequency of the oscillation. That is how fast this change will happen in time. Okay, this is one knob you have. The second knob is the phase of this microwave pulse. So with respect to some arbitrary time axis, the 0 time, whether it looks like a sine omega t or a cosine omega t, that determines in a reference frame whether the state will go from 1 to 0 or 0 to 1 along this axis or along that axis. Okay? So by controlling this phase, you can actually change which way it will move on this Bloch sphere. And then finally, the time, the length of this pulse decides how much rotation you can implement. So you can see that using these three knobs, I can position the qubit anywhere on the sphere if I knew the starting point when I started putting these pulses. This is, from the engineering perspective, what we need to do to prepare the quantum state. So earlier we showed how you measure. This tells you how to create the arbitrary states. Okay. So then you can create any superposition state you want. Okay. Once we can do this, we start to look at how badly is the qubit performing in terms of its coherence time. Okay. So we calibrate the pulse, and this is called a pi pulse, and this pi pulse is the one which takes you from the ground state all the way to the excited state. You put that pulse, you wait a certain amount of time, and then measure. You repeat it for a different delay time. So when you had no delay, the system was in the excited state as you prepared, but as you increase the delay time, the probability decays as an exponential back to 0. This is because in that time scale, the qubit is decaying back to the ground state in a probabilistic fashion. So that's why you have to do an ensemble average. And the fit time here is what is called the T1 time. Yes. So each measurement will give you, either a 0 or a 1. You repeat it many times and you create an average. And then you do it for different time delays as well. So this gives you your T1 time. So this is basically characterizing the process. If you do it with very good signal to noise ratio, instead of doing ensemble measurements, you can actually observe these jumps in real time. Okay? So these are now for about 6 different experiments, but here there is no averaging. This is just a time trace, and I'm looking at this y-axis. You can think of this as the phase shift I was telling you about. You start in the excited state, and then boom, it decays to the ground state. In this second experiment, it decayed after a little longer. Third experiment, a little while longer. So exact time when it happens is random, and it's a Poisson distribution. But here you can actually track the actual quantum state in real time, and you need these kind of high resolution, high SNR measurements to be able to detect the state in a short time with high precision. Okay. It turns out that this is actually not so straightforward. I spent a good part of my
PhD and postdoc figuring out how to improve these measurements to the state that they are actually usable. Okay. The final ingredient is that I need to make these qubits interact. Remember, I told you that these red lines which are connecting the qubits are important. So the blue circles are these LC circuits. Now there are 2 of them. How do I make 2 electrical circuits like this interact? Well, I can just put a capacitor between them, right? It's just an electrical interaction. But this capacitor effective interaction can be done in several ways. You can do it in this way, where now the qubits are all shown as like devices fabricated on a chip. So this red region and the blue region are the 2 qubits. And instead of a capacitance, which would mean putting the qubits physically close to each other, you put a piece of transmission line. So this little meandering thing is a microwave transmission line made on chip, and that allows me to create interaction between qubits which are spaced out on the chip. So this gives me a lot more freedom. Now I can lay out my qubits, multiple qubits, because I have to create a network like this or a larger on a chip. There are other features here. These are, this is again a transmission line resonator for the measurement part, and this qubit also has one. And then you see there are feed lines coming here, which bring in the microwave frequencies for either controlling the qubit by sending a pulse at the qubit frequency, or the measurement by sending a pulse at the cavity frequency. So this doesn't look like an LC circuit, but it's basically like a Fabry-Perot cavity on chip, made using microwave transmission lines with partially reflecting mirrors on either side. But you can also do it differently. So this kind of an architecture is called a fixed coupling architecture, because once you design this, the interaction strengths are frozen by design. You cannot change it in situ. This was the approach which was being used by IBM for most of their work till now, but they have recently changed. And this is a different design. Now the capacitors are plus shaped. So these are the qubits here. The Josephson junctions are somewhere here. And then there is a lot more complicated circuit, which is also made using Josephson junctions. But now I can send in a current or a voltage to control the interaction. So it's like a little switch. So these are called tunable couplers. I can turn the interaction on and off, whereas here the interaction is always present. It turns out that this doesn't really scale very well when you go to large number of qubits. So you really need to move to this kind of technology. Okay. So these are essentially coupled oscillators, and a microwave pulse essentially activates the interaction, and you turn it on for a certain amount of time, which you have to calibrate in order to do the correct 2-qubit operation. Okay. So since I'm running a little slow on time, I'll skip this. These are made using standard nanofabrication techniques, and I will move on to the cryogenic environment and the electronics. So this is a picture of the dilution refrigerator, which is actually used to cool down the system down to 10 millikelvin. So this plate goes to 10 millikelvin. Your experiments are all attached to this. And then there's a lot of wiring and filtering you have to do. So this is showing you the typical wiring for a 1-qubit experiment. So you can see the number of components. There's of course coaxial cables which are bringing in this microwave signal from room temperature down to your low temperature. We have to put attenuators here to suppress thermal noise from reaching the cold temperatures. We have to make special kinds of filters, which issues like crosstalk and overall improvement in device performance. And it comes in 2 variants. And I've mentioned this here is because, as many of you may have heard, the Andhra Pradesh government is bringing one of these machines to Amaravati sometime next year, and that is going to be this Heron 156-qubit system. So this is one of the best quantum processors available in the world today. Of course, there are many other companies like Google's Willow 105 qubits, which made some very good demonstrations on error correction last year. There's also another company called Rigetti, which has chips going up to 84 qubits. Of course, Chinese have been making a lot of progress. They announced a 500 qubit system last year. And apart from this, there are many other technologies which also have commercial ready quantum computers today, which is including trapped ions, cold atoms, and photons as well. But as I said, none of these are free from those errors today. So you can only run calculations for a very short amount of time, and that doesn't leave you a lot of room to do meaningful things. And this is something people are trying to improve, trying to see if even with this limited performance, can you actually get some commercial advantage. A lot of good science is being done, a lot of good science both in understanding
how these machines work, but also on discovering some new physics is happening in these small systems. But commercial advantage is yet to be demonstrated, but people are hopeful that it will happen in the next few years. Okay. Lastly, I'll just talk about the project which we did at TIFR. This is our 6-qubit quantum computer. As I said, even though a 6-qubit quantum computer is useless for doing anything meaningful, you have to start, you have to start building a cycle first before you can build a car. So this for us was a technology demonstration exercise. It uses a very unconventional architecture which was invented in our group as part of one of the students' thesis, and we worked with DRDO and TCS to actually do the full thing. So including the quantum processor unit, the cryogenic setup, the control and measure electronics was of course commercial, but we had to program it, the software layer to convert from cloud to hardware and back, and then automatic calibration to tune these systems up. Here is a picture of the processor here. This is machined out of aluminum, so the microwave resonators are actually machined instead of microfabricated, and the qubits sit on this, we'll see in the next slide, which is all packaged inside this shield. That is the 10 millikelvin stage, and you can see a lot of the wiring, and then when the whole thing is closed up, it looks like this. All the control electronics, your mixers and other things, and the AWGs and the sources are all here in the system. A closer look is this unique ring resonator. So there's a circular transmission line in the middle which actually mediates the interaction. So one of the problems we were trying to solve, not for this project but as a research project, was in a planar geometry how we can create links which are non-nearest neighbor. So in this circuit we actually get this kind of a topology. By putting the qubits in around the ring is able to mediate interactions wherever it goes. So in principle, each qubit could interact with every other qubit, but by carefully choosing the frequency and the placements, we realized something which is reliable and robust and gives you this kind of a connectivity. And there you see the superconducting qubit chip. This is about 4 or 5 millimeters and about 2 millimeters in this way. And the shiny parts here are the capacitor pads, and the Josephson junction is right in the middle. And this thing sits between this circular transmission line and these little cantilevers. These are all lambda by 4 resonators as well, which is used for measurement. So the same qubit interacts both with the measurement cavity and with this ring here, which gives us to this kind of thing. Okay, so we had this in our system, so we decided to use this for the 6-qubit thing. To show you a comparison, this is our 6-qubit processor, which is 75 millimeters across. And here is an old 5-qubit IBM chip, which is 4 millimeter across. Of course, this is because everything is integrated on chip. We use this because we wanted to keep it modular and play to our strengths right now. We are now slowly moving towards creating these high-quality integrated circuits for which better fabs need to be built as well. Okay. So using this system, we were able to create a cloud interface, which was prepared by TCS, so you can log in. You can use this kind of an interface I showed you to program by dragging and dropping these operations, and at the end you'll get some probability distributions of the different qubits you have created. The end-to-end testing of this was done by sending a circuit and then looking at the results. This automatic calibration software is still work in progress. We're trying to make it a lot less manual. Currently we do it partially manually, so it takes a lot of time. It also doesn't give us very good results unless we spend a lot of time. And of course, this was a massive effort with lots of students across many, many different years. So it's a big thanks to all of these guys for various contributions. And then finally, I just want to flash this one slide. And this was mentioned during my introduction that thanks to all these developments, I was given the opportunity to lead a team which is pan-India to build superconducting quantum processor-based technology. This is the National Quantum Mission's technical group on superconducting qubits. It consists of 5 institutions, with the lead institution being TIFR Mumbai, with myself being the lead investigator, another team at IISc Bangalore, one at IIT Bombay, TIFR Hyderabad, and IIT Madras. So you can see that when we start to build technology, we have to bring in expertise from various different places. So 4 of us, me, Vibhor, Baladitya, and Vishal, we have background in superconducting qubits. But then we needed a person, Chetan Singh Thakur from IISc, who's an electronics expert who does FPGA electronics for doing the control electronics. We have Viresh Deshpande from IIT Bombay, who's a multi-layer chip
expert, because as we go to larger number of qubits, we cannot just do it in a single layer. And there are different challenges than standard semiconductor devices when you make superconducting qubits. Then, of course, we have help from our theorists, Sai and Prabha, who are going to look at error correction and optimal control to figure out how to extract the best performance from the given circuits. This entire effort will be supported by national level centralized fabrication facilities. So 2 new facilities are being planned, big ones, one at IISc and one at one at IIT Bombay, and then some smaller ones at IIT Delhi as well. There will be many other partners and other technical groups, and also strong collaboration with industry and startups, where we hope that many of these things will turn into prototypes, which can then be commercialized and made into products for the global market. So with that, I will put on my summary slide, and I hope I was able to show you that quantum computers use these 2 new rules of superposition and entanglement, and that gives them immense power. And these new rules can allow speed up of certain tasks. And this is very important. Your emails and word processing is not going to get better because of quantum computing directly. But there are some niche applications, but the moment you say that we can solve quantum mechanics in a much more efficient way, the number of applications just explodes, because it's in chemistry, in chemical reactions, you can find better pathways, you can invent new materials, new drugs, the list is endless. But these are still to be demonstrated and seen in the future. Okay? So there are also other applications like optimizing your financial portfolio, because these quantum computers tend to be good at problems where many different paths have to be explored at the same time, and they can do that in a more efficient way. But as I said, practical applications are yet to be demonstrated, and new applications and algorithms may also emerge. This is also an ongoing area of research. And superconducting qubit hardware platform, which is the one I work in, is one of the leading platforms for building practical quantum computers, because they are sort of rely on this integrated circuit technology, and they seem to have the best combination of parameters for scaling up. But tomorrow, a new technology could completely throw all of this out of the water. That is yet to be seen. Okay? And then I would say that India is also entering this race in a big way with the National Quantum Mission, which not only is going to work on quantum computing, which I talked about today, but other aspects of quantum technology for using secure communication, using ideas of quantum cryptography, ultra-sensitive detectors for both health and other kinds of oil exploration, submarine detection, you name it, navigation, and then also materials for helping all of these technologies reach the next level. So with that, I'll stop and I'll take any questions. Thank you. Thank you, Professor. Yeah. Your questions, please. Yeah, thanks for a lovely talk. I've heard quite a few talks on quantum computing, and I would say this was one of the ones that really takes one from the basics up to the thing. I had a couple of questions. So this coupling between qubits, I thought that it should be a free parameter, right? But the one which has the fixed coupling, you can only get then some fixed linear fixed combinations between the qubits, right? Or how does it work? Yeah, so that's a very good question. That arises because I didn't go into the details. And also, is it equivalent to some amount of the energy going from here to there, or? Absolutely. So you can imagine the simplest, often done in undergraduate labs, the experiment on coupled oscillators, right? Often we have 2 pendulums hanging on a string. We put one of them in motion, and then we see that slowly it transfers the energy to the other one, and vice versa, right? So that operation is called a swap operation. If you stop it exactly midway, that is called square root of a swap. And turns out that that is an elementary operation for doing entanglement for qubits. Okay? So what you said is absolutely right, that if this connection is always there, then the qubits are interacting all the time. This energy exchange is happening all the time. How do I actually control what it's doing? And that's because I missed a detail here, which I didn't have time to explain, is there are 2 approaches. One is that if you make tunable qubits,
you can keep them off resonance. And if they're off resonant, they will not interact, even though there is an interaction path between them. And then when you're ready to do the 2-qubit operation, you bring one of them into resonance for the right amount of time and then take it back off resonance again. This is one technique. The other technique is where the qubits are not tunable, but you then design them to be off resonant by design. So they're always off resonant. So under normal conditions, there's only a slight amount of effect on each other, but they don't interact strongly. And then you use an additional microwave drive, which sort of exploits the presence of some of the level structure there, to initiate an evolution in the dressed picture. So it becomes, now you get into, this is actually the phenomena which is called cross resonance. You drive this qubit, but at the resonant frequency of that qubit. And that creates an effective interaction where this qubit rotates in one direction or the other direction depending on, this one rotates in one or the other direction depending on whether this qubit was in the ground or the excited state. The idea core to doing 2-qubit gate is to do a conditional evolution. The second qubit should evolve in a way which is dependent on the state of the first qubit. So even with fixed coupler technology, by using this detuned qubits, you can do this, but that remnant interaction, even though it's weak, it becomes a problem as you scale this up to larger and larger number of qubits. And that's actually the reason why I think even though IBM went on this path, they are now retracing back and coming into exactly. So the tunable coupler technology allows you to just completely cut off the interaction, and that is the best way. The earlier wisdom was that tunable coupler means one more element, another set of wires coming down the cryogenic system, which means more resources, and another path for noise to enter the system. So this was initially considered to be not great, but now with engineering improvements, those things have been solved to quite an extent, and you can do it a lot more better. It turns out that in the long run, that is better. But in a n-bit system, this will again grow as NC. You have no option. Yeah. You will have to either bring in that many lines, or people are now working on ways where the signals actually come in on an optical fiber, and then at a lower temperature stage, they get distributed into different things. So there are things of converting optical. This morning, you're telling me about the optical receiver. It's sort of a version of that, but something which operates on the cryogenic stage, but in both directions. So from an optical signal, you create microwaves, and then for detecting the microwaves, it will do something to the optical signal, which then, so then in a single optical fiber, you have a lot more bandwidth. You can control many, many different oscillators. So frequency multiplexing, time domain multiplexing, all of these techniques are used. I think there was one question here, green shirt, yeah, and then over there, I guess, yeah. Firstly, I would like to thank you, sir, for introducing a different part of engineering in a simpler manner. Thank you for that. And the second thing is that my question is all about the number of qubits you are going to use. In Bangalore, that you said that it is 24-bit, and in Mumbai it is like 100 qubits. So how you are going to decide that number? Oh, no. So we have decided that number already, that is the scale at which we are going to operate. So, 24 may become 25, 100 may become 90 or 105. That will be nailed down at the last stage when we finalize the exact details of the architecture. But that's roughly the scale. And this is basically decided based on some of the engineering challenges we have to tackle. To go from 6 to 24, we have to solve certain problems. And then from going from 24 to 100, we have to solve certain other problems. Now, when we solve those problems for 100, we can probably push it to a few hundred, 400, 500. But then the next one will be at 1,000. Right? So that is the thing. So since we are starting and we have to set up many of these facilities, that's the goal we have based on our current capabilities. Yeah, thank you, sir. Yeah. Sir, I am just asking. Please, yeah. So, sir, I am just asking that when you're measuring something, so according to quantum physics, that when you're measuring something, you are disturbing the system. Yes. So, if you're disturbing system, then how can you accurately measure it? Okay, that's a great question. So, it's a fundamental property of the quantum systems itself. Okay. So, let's consider 3 quick examples. So, I can create the qubit in 0 state. Now, when I measure a 0 state, the answer is 0 and nothing happens in terms of
disturbance. Without disturbance. So you will realize what exactly the meaning of the disturbance is. If it is in 0, it will remain in 0. If I put it in 1 and I measure, excuse me, I'm sorry, I'm having some allergies. If I put it in 1, again the measurement should give me 1 and the qubit will remain in 1. Okay. This has got to do with the measurement interaction we have created. Now, where does the disturbance idea quantum computer and let it evolve? So there is no guaranteed way of knowing. You have to use some extreme cases to extrapolate and come up with various techniques to figure out that, okay, this seems plausible, because you are going to be going into uncharted territories. You have no idea to know, but you will have some idea from the physics that, okay, this seems like the feasible answers. In some case, you will be able to verify this maybe in a real experiment. For example, if you invented a chemical pathway for a faster reaction, you can test that reaction and see if it works as well as you predicted or not. So, but that is actually, verification is a big challenge. Yeah. Okay, thank you. Hello. Yeah. Thank you, Professor, for setting technical tone of today's program. So, no program we close with the thanks, vote of thanks. So, I invite Mr. Imran for the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Today's guest speaker, Professor Rajmani Vijayaraghavan, TFR Mumbai, Professor Yashwant Gupta, Center Director, NCRA GMRT, Professor Ishwar Chandra, Dean GMRT Observatory, NCRA GMRT Group Coordinators, Engineers, staff members, and ladies and gentlemen. It is indeed a great honor and privilege for me to propose the vote of thanks on this special occasion of Engineers Day. On behalf of organizing team and entire GMRT family, I take this opportunity to extend our sincere gratitude to all who have made today's Engineers Day celebration a memorable one. First, we extend our heartfelt thanks to guest speakers, Mr. Mukul Vasne from GMDR Pune and Professor Rajmani Vijayaraghavan, TFR Mumbai, for their valuable presence. Your insightful talks have truly added immense value to our celebration. We are grateful for the time and thoughts you invested here with us today. Our sincere thanks to Professor Yashwant Gupta, Center Director, NCRA GMRT, and Professor Ishwar Chandra, Dean GMRT Observatory, for their valuable guidance. We would also thank Dr. Suresh Kumar and Shri Shailendra Bagre for representing the NCRA GMRT engineers and introducing today's guest speaker to the audience. A special thanks and appreciation to all the engineers here who have contributed in many ways for the success of this program. We are also grateful acknowledging the contributions of our contractors and their teams who have worked behind the scenes to support infrastructure and operations. I would like to thank to Messrs. JM Labor Suppliers for providing delicious food for this event, Messrs. Swapnanjal Garden Services and Messrs. Sunlord Cosmetics, Messrs. Sanjay and Santosh Electronics for extending their support for the success of this event. Our thanks to Shri Deepak Bhong, Shri Rahul Bomle, Shri Ajit Pawar for extending their support for audiovisual arrangements for this event. Last but certainly not least, thank you to our team admin for all the arrangements for this event, starting from cleaning, garden maintenance, arrangement at venue, to canteen staff for the food we are going to relish soon hereafter. Let us continue to uphold the spirit of engineering excellence and innovation in all that we do. Thank you all once again. Now I would like to request Shri A.B. Jhondle, Senior Administrative Officer GMRT, to please conclude this program.
So with the approval of the Center Director, I declare the closure of the program followed by the national anthem. I would request all to stand for the national anthem. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तब शुभ नाम